So, to take a final call on whether to continue with the 8 o'clock class or extend it by 1 hour and go ahead with 9 to 10. Let's see. A lot of people saying that they prefer 9 to 10. So, today we'll take a final call because not too many people shared it in the comment box. We'll have to see further. Right. Okay. So gradually people are joining in. We'll see. Good evening, whoever's joined. So shall I start off as usual? Okay, let's wait today for a little more time and then we'll go ahead. So just two people in place. All right, I don't think I should keep the others waiting. We'll go ahead. So let's start off with certain vocabulary. I'll be telling you the words. So someone who uses abusive language, so the गाली देने को आप कहते हैं abuse. I'm starting with the basic and then we'll move on to the advanced level. और अब जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल अगर होता है तो that is filthy, FILTHY, filthy words. I think there has been some confusion. I'll have to wait a little more and then go ahead because most of the people say that by the time I start with the classes, they're already on the way home, haven't reached. Is it Saturday party mode or what? Something like Saturday night thing? Yes. So the first one I said was गाली गलौज करना, abuse, और आप इसी तरह से बोलते हैं don't abuse. Next is, like I said, I'll repeat. गंदे शब्द is filthy words. Right? Good evening. And next is, अगर आप गोद लेते हैं किसी को तो आप यूज करते हैं adopt. Despite having two sons, they have adopted a daughter. Next is जो ये झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, मीन्स जिनके पास आपको लगता है कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो डॉक्टर बने हुए हैं. सो यू कैन से अ क्वैक, QUACK, quack. He's a quack. Don't go to him for your treatment. He is a quack. Right? Next is
अगर मोच आ जाती है, then what do you call that? Well, she cannot come today because she sprained her ankle. Sprain, S-P-R-A-I-N. So she sprained her ankle, so she won't be able to come. Next, when you copy somebody, आप नकल करते हैं तो उसको कहते हैं imitate. I-M-I-T-A-T-E. Some of the words may be a repetition for some of you for obvious reasons that new people keep joining in, so we have to consider everyone. Next is bahana banata koi. So when someone makes an excuse, he or she's making an excuse. Then आप किस चीज में योगदान देते हैं, that's when you say contribute. Contribute. People of India have contributed towards the construction of Ram Mandir temple. Mandir temple, Ram Mandir, that's just the translation, right? Next is bhadas nikalna. So when you say bhadas nikalna, you can say went out. V-E-N-T-O-U-T. Well, I was so upset that I needed to vent out my feelings desperately. And that's when I called my mother and I spoke to her. So went out, bhadas nikalna. Then कुछ mess up चीजें खराब कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो mess up. Well, I had put in so much of effort to get that client, but my friend messed up everything. My friend messed up everything. M-E-S-S, mess up. एक खाने की mess होती है, ये mess up होता है, और एक मुझसे पंगा मत लो. अगर आप ये बोलना चाहते हो इंग्लिश में, if you want to say मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me. Don't mess with me. Next is टेढ़ा मेढ़ा. So if something is not in place, टेढ़ा मेढ़ा है तो zigzag. Next is जानबूझकर. कोई जानबूझ के कुछ करता है तो उसे deliberately. D-E-L-I-B-E-R-A-T-E-L-Y. Deliberately. She did it deliberately. Good evening, Shekhar. So she did it deliberately. यानी उसने जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ. Next. If you're talking of, ये छोटे छोटे वर्ड्स भी कई बार आप एकदम से अटक जाते हैं when you start learning English and when you're just beginning to get fluent, then शायद आप इंग्लिश में बोलेंगे perhaps she waited too long for the bus and that's when she left. शायद, perhaps. Next is rift. अगर दरार पड़ जाती है तो उसको आप बोलते हैं रिफ्ट. और माफ करने को आप क्या बोलते हैं? फॉरगिव. और श्राप देने को कर्स. C-U-R-S-E, कर्स. तबाह करना, डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय, D-E-S-T-R-O-Y, destroy. और समारोह को, अगर कोई समारोह है कहीं पे तो यू कैन से सेरेमनी. तभी आप बोलते हैं ना शादी का फंक्शन है, शादी का समारोह, सो मैरिज सेरेमनी. नेक्स्ट इज चिल्लाने को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्रीम. स्क्रीम, S-C-R-E-A-M. स्क्रीम. पहुंचने को आप क्या बोलते हैं? जैसे आप टेबल वगैरह में पहुंचते हैं जो वाइप. W-I-P-E, वाइप.
I think I'll have to move to certain high level words and vocabulary, because that's when some people join and expect. So you can say, अच्छा आप किसी के मुंह पे ऐसे पानी मारते हैं या अपने फेस पे ऐसे करते हैं, तो what is the word that you use? Splash. देखो ऐसे आपने फेंका, that's throw. ऐसे आप मारते हैं पानी, splash some water on your face. Go, you seem to be feeling sleepy. Why don't you go and splash some water on your face? अच्छा, जो धमकी देके पैसे निकलवाते हैं उसको क्या कहते हैं? अगर आपने धमकी देके पैसे निकलवाए हैं तो that you say extort. Well, all the money that you see with him is not hard-earned money. He's extorted that money. यानी धमकी देके निकलवाए पैसे. Next is perplex. जब आप थोड़ा हैरान हो जाते हो, कंफ्यूज होता है, perplex, PERPLEX. Perplex. What is the word for people who cannot sleep properly? जिनको नींद पूरी नहीं आती है उनको क्या कहते हैं? Insomniac. और नींद नहीं आने को insomnia. INSOMANIA. insomnia. अनिद्रा रोग, आप हिंदी में अगर शुद्ध उसमें बोलेंगे तो अनिद्रा रोग. नेक्स्ट इज कोई जो पक्का साथी होता है, तो जो कोई पक्का साथी है तो आप उसको बोलेंगे कॉमरेड. कॉमरेड. चलिए, अब ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा, नॉट एवरीबडी कुड बी क्वाइट अवेयर ऑफ दिस. जब आप किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपते हैं, सौंपना इज एंट्रस्ट. ENTRUST. Entrust. I have entrusted Rohit with the responsibility of the cafe. Next is नकचढ़ा को क्या कहेंगे? वो बहुत नकचढ़ा है. Fastidious. 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 घाव. घाव हो जाता है, चोट वोट का जो होता है, what do you call that in English? Gash. 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 और खरोंच को क्या कहेंगे आप? खरोंच समझते हैं, जैसे ऐसे आप जा रहे हैं कहीं से, बस ऐसी लग गई आपको एकदम से लाइन सी लकड़ी से या किसी और चीज से, तो उसको खरोंच बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ग्रेस. और जो ऐसे कुछ चोट लगने से कुछ फूल सा जाता है इस तरह से स्किन पे, तो उसको बम्प. BUMP. नेक्स्ट इज अगर गले में खराश सी हो या आवाज भी गड़बड़ हो जाती है तो सॉर थ्रोट. अच्छा, जब आप टायर में हवा भरते हैं, अगर आज डाइवर्स वोकैबुलरी है, I mean, we're not restricting ourselves to kitchen or personality or anything. It's diverse. Let's see how much you can retain. So हवा भरनी होती है अगर टायर में, या वैसे हवा भरे, ईगो बढ़ाने के लिए भी बोलते हैं बहुत लोग. इन्फ्लेट. इन्फ्लेटेड ईगोज, बहुत अपने आप को समझते हैं जब लोग, तो हवा भरना इज इन्फ्लेट और हवा निकालना इज डिफ्लेट. DEFLATE. What is the word, another word for shatruta? Shatruta is enmity. ENMITY. Enmity.
What is another word? Of course, you know happiness, you know you've learned other words. But एक और word खुश होने के लिए exult. 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 What is another, what is, okay, what is the Hindi word for folly? FOLLY. Folly. मूर्खता. मूर्खता. किसी चीज में, जैसे कोई सेल में या किसी चीज में जब उछाल आता है तो क्या कहते हैं? बम्प. बूम. You say there has been a boom. And okay, you've heard the word confident. Confident. What do you think is the antonym? Diffident. जैसे shy बोलते हैं, confident नहीं है, shy है, घबराते हैं. So diffident. 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 और निराशा जैसे आप बोलते हैं, उसके लिए दूसरा वर्ड क्या होगा? निराशा. Despair. 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 He was in great despair. असभ्य समझते हैं, एक होता है कि भाई आप में तमीज है, मैनर्स है, एक नहीं है तो बोलते हैं असभ्य. सो असभ्य, यू कैन ऑल्सो से barbarous. 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 जो अब चोट लगने की जब हम बात कर रहे थे तो हमने और चीजें बताई, तो उसी के अंदर एक आता है कि अगर वैसे आपको चोट लगती है जिसमें नीला पड़ जाता है तो उसको कहते हैं ब्रूस. BRUISE. ब्रूस. नेक्स्ट, लेजी के लिए एक और वर्ड. व्हाट इज द अदर वर्ड? आपने इंडोलेंट पढ़ा था. व्हाट इज द अदर वर्ड? स्लॉथफुल. SLOTHFUL. Slothful. पवित्र के लिए क्या वर्ड होता है? अगर आप ये कहना चाहते हो पवित्र है ये चीज या ये पवित्र. Sacred. SACRED. शानदार अगर बोलना हो किसी को, वाह क्या शानदार अरेंजमेंट था, या कितनी शानदार लुक है, व्यू है. स्प्लेंडेड. SPLENDID. स्प्लेंडेड. विन तो आपने सुना ही होगा, जीतना, विन. व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर विन? एक्सक्यूज मी. ट्रायम्फ. ट्रायम्फ. TRIUMPH. आपने दिवाली के रिलेशनशिप में ये वर्ड पढ़ा होगा. द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, सो इज अ ट्रायम्फ. तो विक्ट्री की जगह आप ट्रायम्फ भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज तुच्छ. बहुत छोटी सी कोई बात है, तुच्छ. ट्रिवियल. ट्रिवियल. TRIVIAL. ट्रिवियल. जिद्दी का आपको स्टबन था, आपको अगर याद नहीं है तो इट कैन बी अ क्विक रिविजन. जिद्दी के लिए एक और वर्ड है ऑब्स्टिनेट. OBSTINATE. ऑब्स्टिनेट. If something is not clear, it's a vague. VAGUE. Not clear. It means something that's not clear. It could be a picture, it could be something else. So it's vague. उत्साह के लिए आप क्या कहते हैं? उत्साह से भरा है, full of zeal. 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 Enthusiasm.
और उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? एपैथी, इंडिफरेंस। यानी एक तो आप इतने उत्साह से भरे हुए हैं, बहुत जोश है, और दूसरा आप एकदम ही ऐसे कैजुअली, ना कोई उत्साह ना कोई जोश. सो यू कैन से एपैथी एंड इंडिफरेंस. चलिए अब बताइए, लैक के लिए हम और कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? कोई चीज की कमी हो, लैक, कमी, LACK. तो what are the other words we can use for that? That could be dearth, DEARTH, dearth. There is no dearth of talent in India. There is no dearth of talent in India. Another word, किसी चीज की कमी के लिए आप ये भी यूज करते हैं, deficiency. नॉर्मल वर्ड है आजकल, विटामिन D डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी. हाँ, आयरन से आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि IRON is iron, not iron. Please be careful with the pronunciation. Iron. ऐसे ही अनियन बोलते हैं, ऑनियन नहीं, इट्स अनियन. कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज आप जानते हैं, increase, so I think everybody knows. So what is the other word for increase? You can write proliferating. Proliferating, PROLIFERATING, proliferating. चलिए, रिजल्ट के लिए आप और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? भाई इस चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा. You please be assured that the result of such an act will not be good. So result, outcome, outcome. Another word can be consequence, 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 consequence. और आई थिंक ये तो कॉमनली पता ही है, बट जस्ट फॉर शेयरिंग, काफी, जैसे कहते हैं ना काफी स्पेस है, वहां बहुत स्पेस है, एम्पल, AMPLE, एम्पल. और एम्पल की तरह ही दूसरा वर्ड, अगर कुछ चीज काफी मात्रा में है, प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल, PLENTIFUL, प्लेंटिफुल. Next is pronunciation, बता देते हैं थोड़ी सी. JEWELLLARY is jewelry, not jewelry. Jewelry. Similarly, बहुत कॉमन जो गलती है, पहले भी बताया, रिपीट करते रहना पड़ता है इसको क्योंकि इतनी ही कॉमन गलती है ये, that it is not pronunciation, it is pronunciation. Pronunciation. Now we'll consider certain words, the way they are said, and how can we be different. तो आपने ये तो खैर बहुत ही कॉमन है, सभी जानते हैं कि अगर आप किसी को हालचाल पूछना है तो आप कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू. तो अगर आपको उसकी जगह कोई वर्ड्स यूज करने हैं, यू डोंट वांट टू से ओनली हाउ आर यू, you want to use different words. What can be those? You can say, how's it going? How's it going? How, apostrophe S, it going. और ये भी आपने सुना होगा, इंटरेस्टिंग लगता है, What's up? What's up, baby? Right? How's everything? How's everything? How are things? जैसे आप मतलब हमेशा डायरेक्ट नहीं पूछने के बजाय, you can just change it and then say, how are things? अब how to change some sentences in a way
कि सुनने में बेटर लगे, वो सुनने में और बेहतर लगे. तो इंस्टेड ऑफ मतलब इसको हम मोर, हाउ कैन वी बी मोर पॉजिटिव in saying certain things. So I'm going to share a sentence first, as normally we speak the same way, and then I'll share how do we speak it in a positive way. So one is, I'm tired after work. I'm tired after work. And you can change it to, it was a hectic day. It was a hectic day. Hectic. Hectic day. Right? Next is, this task is difficult. This task is difficult. So instead of difficult, what can you say? This task is challenging. This task is challenging. However, but की जगह भी however एक better option है. However, I am game for it. I am game for it is मेरे को कोई problem नहीं, accept कर लूँगा इस task को. Now अगर मौसम की बात चल रही होती है तो आप ऐसे कह देते हैं, the weather is so bad. The weather is too bad. आप पॉजिटिवली कैसे कहेंगे इसको? मीन्स वर्ड तो बैड के लिए इक्विवेलेंट ही यूज होगा, बट हाउ कैन इट बी अ लिटिल मोर पॉजिटिव व्हेन यू स्पीक? द वेदर इज अनफेवरेबल. द वेदर इज अनफेवरेबल. Next one, I am a bit stressed about it. I am a bit stressed about it. तो आप stressed की जगह आप इसको थोड़ा positive indication देने के लिए कह सकते हैं, I'm a bit overexcited about it. I'm a bit overexcited about it. अब कभी गलती हो जाती है, डिले हो जाती हैं चीज़ें. रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कपिल शर्मा इंडिगो की जिस फ्लाइट में थे, दैट फ्लाइट गॉट डिलेड. And of course, I mean, a lot of people have trouble. किसी का कुछ अर्जेंट काम होता है, किसी का कुछ पैसे से लेन देन होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि चलो कोई मिलने ही जा रहा है किसी बुजुर्ग से. So delay causes inconvenience. So you can say he was annoyed by the delay की जगह आप कह सकते हैं he was inconvenienced by the delay. तो annoyed एक नेगेटिव वर्ड रहेगा, उससे कंपैरेटिवली इट्स बेटर टू से inconvenienced. नेक्स्ट, किसी को आपको शांत करना हो या रोकना हो, रुक जाओ, शांत हो जाओ. होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड योर हॉर्सेस. नेक्स्ट इज, अगर अब चलिए अब वहां से घूम फिर के किचन की तरफ पहुंच जाते हैं, तो अगर आपको बोलना हो दूध छान दो, तो कैसे बोलोगे? दूध छान दो. स्ट्रेन द मिल्क. स्ट्रेन द मिल्क. और वही अगर आटा छानने की बात हो तो ये सारा रिविजन है थोड़ा बहुत बीच बीच में से. यस, अगर आटा छानना हो तो सिफ्ट द फ्लावर. सिफ्ट द फ्लावर. SIFT, ये सीखा था आपने थोड़ा दिन पहले. नेक्स्ट इज, अब उसी का ही मैंने बोला ना, थोड़ा थोड़ा बीच में इधर उधर से रिविजन करते रहेंगे. मसाले कूट दो. मसाले कूट दो. तो या लहसुन को कूट दो, चलो और सिंपल कर देते हैं. तो कूटना है पेसल. पेसल द गार्लिक. और अगर पीस दो तो ग्राइंड. ग्राइंड, मसाले पीस दो. ग्राइंड द स्पाइसेस. Okay. Next is, when you want to say you hate someone, what are the other options you have? If you want to say you hate someone, the other options you have is I scorn you. SCORN. I scorn you. I detest you. DETEST. I detest you.
वैसे तो ऐसे शब्द अवॉइड ही करने चाहिए, बट सिचुएशन आ जाती है तो मैं तेरे को नहीं झेल सकता। आई कांट स्टैंड यू, मतलब नफरत है, पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आई कांट स्टैंड यू। यस। अब हम आ जाते हैं कि किसी चीज की कीमत अगर बहुत बढ़ रही हो, प्राइस बढ़ रहा हो, तो आप कहते हैं द प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। तो स्काई रॉकेट अगर बढ़ना होता है तो स्काई रॉकेट, द प्राइस ऑफ फ्यूल इज स्काई रॉकेटिंग। चलिए, आप में से जो भी अटेंड कर रहे हैं, जबकि आप काफी बच्चे, आज नहीं समझ में आया मुझे कहाँ कहाँ इधर उधर हैं, बट एनीवे, क्या आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीन अप, क्लीन अवे, क्लीन ऑफ एंड क्लीन आउट? वो गेम वाला नहीं, it's actually English that you're learning. Clean up, when you're cleaning some bigger spaces, आपने बहुत बड़ा कमरा साफ करना है, अपनी बड़ी जगह साफ करनी है, so clean up the room. Clean away, जैसे आपकी अलमारी वगैरह आप साफ करते हैं, where there is mess, you want to clean that. So you say clean away means to clean the mess and arrange things. You can write down to clean the mess and arrange things. Clean away यानी आपने उसको वहां से मेस हटा दी, क्लीन अवे। क्लीन ऑफ, अब जैसे अगर ये मेज है और मैं इसका फ्लैट सरफेस साफ कर रही हूं, तो क्लीन ऑफ, OFF, क्लीन ऑफ, राइट? ओके, नेक्स्ट इज क्लीन आउट। राइट डाउन, क्लीन आउट मीन्स टू रिमूव डस्ट फ्रॉम इनसाइड ऑफ समथिंग। जैसे हम अंदर रैक है, ड्रॉर है, और उसके अंदर से हम सफाई करके मिट्टी निकाल रहे हैं, तो दैट इज क्लीन आउट। ओके, अगर अभी जैसे न्यू ईयर कई लोग मानेंगे, अगर कोई पहली बार मिल रहा है तो वो मान ही लेगा कि नया साल ही है। सो व्हाट आर द अदर वेज, अगर आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, व्हाट आर द अदर वेज यू कैन रिस्पॉन्ड? सो यू कैन से you stole my greetings. You stole, STOLE, you stole my greetings. Another thing you can say is, somebody says Happy New Year and you want to respond, especially in writing, you say likewise. LIKEWISE, likewise, यानी आप भी ये कहना चाह रहे हैं। And इसी चीज को आप सिंपल उसमें कह सकते हैं, somebody says something, so I feel the same for you. जैसे आप अच्छा सा लिखते हैं ना, may the new year bring you happiness, joy, all the success and all. So you can write down, I feel the same for you. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपके लिए बहुत अच्छा सा संदेश भेजता है, बहुत अच्छे से विश करता है, you can say the feeling is mutual. The feeling is mutual. MUTUAL. The feeling is mutual. I hope you've written that. अब ये मैथ ऐड कर देना, I hope you've written that. ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है आपने ये 4 पॉइंट्स लिख लिए होंगे। नेक्स्ट इज how thoughtful of you. How thoughtful of you. ये आप और चीजों में भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। Good evening. How thoughtful of you. Right? Next is, I think this is some, okay. I find it a little tough to, read from here. So at times I just take screenshots and then later on I'm able to see this. Yes.
Okay. Yeah, so some of my students are joining late. Anyway, so we continue. So we about someone sending you a greeting and you responding to that. So if someone says Happy New Year, you can even respond by saying, how thoughtful of you. Yes. Good evening. Good evening. और कई बार आप ऐसे सिंपली बोलोगे वाओ आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से टू यू. उसने दुनिया भर की अच्छी चीजें आपको बोल दी कि भगवान करे आपकी खूब तरक्की हो, आप खूब प्रोग्रेस करो, नया साल आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लेके आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी. तो आप लिखोगे, आप भी कह सकते हो वाओ आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू. नेक्स्ट इज यू कैन इवन से डिट्टो. किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, आप उसको लिखेंगे डिट्टो. Have an awesome new year. Have an awesome new year. Right? Now we're going to talk of the difference between some words. अब बहुत बार बात चलती है तो कोई लोग बोलते हैं कभी few, कहीं a few, कहीं the few, कहीं little, कहीं a little, कहीं the little. So I am just going to read that. Yes. Again, I'll have to save it, maybe, and then take it further, and later I'll address this. Yes, definitely I'll look into this, whatever your request is, and we'll consider that. Now, I was talking about few, a few, the few, and little, a little, the little. When do we use few? जब आप किसी चीज को गिन सकते हो तो आप उसके लिए few लगाओगे. And if you cannot count, then you will use little. That's the major difference between few and little. However, now we want to discuss few, a few कहाँ लगता है, the few कहाँ लगता है. तो अगर कोई चीज बहुत कम है, जैसे आपके दोस्त ना के बराबर करीब है, तो आप बोलोगे I have few friends, यानी almost none, है ही नहीं करीब करीब. फिर a few means थोड़े. I have a few friends in college, यानी आपके थोड़े फ्रेंड्स हैं. अब अगर उन थोड़ों को, लेकिन वो थोड़ों में से आप किसी को भी आउट नहीं कर रहे हैं, उन थोड़ों को आप बात कर रहे हैं कि I invited the few friends I have in college to my party. तो मतलब जो वो थोड़े थे वो सारे के सारे आपने पार्टी में बुलाए. So I'll repeat. Few is almost none. Right? ना के बराबर. A few means some. थोड़े या थोड़ा. And the few means वो जो थोड़ा है वो पूरा. So अगर मेरे 5 फ्रेंड्स हैं तो मैंने पूरे 5 के 5 फ्रेंड्स को अगर पार्टी में बुला लिया, so I can say I invited the few friends that I have on my birthday party or to the party. Up a little, the little, little, same way. Little means there is little water in the jug, means ना के बराबर, बहुत कम पानी है जग में. There is a little water in the jug. तो a little means थोड़ा है. And there is, please finish the little water that is there in the jug. यानी कि वो थोड़ा जितना भी है उस सबको खत्म कर दो. या फेंकना है तो throw the water, the little water that's there in the jug. Right? So ये आपने आज सीखा difference between the usage of few, a few, the few, little, a little, the little. Next is certain words that you might like to use otherwise. What is jeopardous? Or maybe the pronunciation could be different. Yes, we can also correct some grammatical errors today. So when you say marry, what is the preposition you need to use with marry? बहुत लोग कहते हैं he was married with her. With is wrong. He was married to her.
तो marry के साथ आप लगाएंगे to. और if some father is marrying off his daughter, वो पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है, so he is marrying off, OFF, marrying off his daughter. बहुत बार लोग बोलते हैं to, let's go to shopping. No, if it's a place you can use to. Go to London, go to Australia, go to gymnasium, go to the cafe. But if it is shopping, let's go shopping. Let's go shopping. अच्छा सा फील आता है शॉपिंग करके ज्यादा लोगों को. Yes. Another very common mistake. इसके ऊपर मैं पूरा चैप्टर, I mean पूरा 1 hour session I'll conduct live for the common errors, but currently we're taking which are very, very common. I'm going to home. Incorrect. I'm going home. ये बहुत common error है. I didn't said that. No. Again, very common error. I didn't say that. With did, you always use first form of the verb. I didn't say that. Next is, अच्छा ये बताइए, in time, on time, by time, at time, क्या difference है? In time, on time, by time, at time. ये मैंने भी कहीं देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये अटेंशन कैच करने के लिए सही तरीका था. सो इन टाइम, जैसा पहले बताया, एक बार रिपीट कर देते हैं आप. पहले मीन्स इन वन ऑफ द वीडियोस अर्लियर, इन टाइम मीन्स अगर आपको 10 बजे तक पहुंचना है और आप 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाते हैं, सो यू आर इन टाइम. 10 बजे पहुंच जाते हैं, 10 बजे, तो यू आर ऑन टाइम. और एट टाइम का मतलब ये है जब आप टाइम लगाते हैं एट 6 o'clock, एट 7 o'clock. सिमिलरली बाय का भी वही है. I reached home by 9 p.m. So by, in, on, at, right? When do you say travel in a bus, travel on a bus? कौन सा सही है? Travel in सही है या travel on? Yes, चलिए इसका आप आंसर दीजिएगा. I expect that in the next class, in the next live, which will be on Monday. Yes, Monday, please check, all of you, that the live might be a little later because a lot of people have kind of suggested that start a little late. तो मैं हो सकता है कि 9 तो नहीं, but maybe 8:30 तक start करूँ Monday. We'll give it a try, 8:30. So please log in at 8. I'm standing in the gate. No, I'm standing at the gate. अब मुझसे सहन नहीं होगा. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब मुझसे सहन नहीं होगा. I can't take it anymore. I can't take it anymore. Thank you for the love through the emojis. Yes. Next is some words for you feeling sad. So if you're sad, you can also use the word dejected. D-E-J-E-C-T-E-D, dejected. I felt dejected when I lost the offer. What is the other word you can use for beautiful? किसी सिचुएशन में या किसी जगह का आप बात कर रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? तो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. सिंपल हुआ, बेसिक लेवल ब्यूटीफुल. नेक्स्ट विल बी आई कैचिंग. आई कैचिंग. और थोड़ा लेवल अप और करेंगे, मेस्मराइजिंग. मेस्मराइजिंग. लार्ज हार्टेड को आप क्या कहते हैं? थोड़ा बड़ा दिल हो, दया का भाव हो. सो जेनरस. Generous. Generous. So basic level will be kind. Intermediate level will be generous. And advanced level will be benevolent. Kind को ही आप ऐसे बोलेंगे, दया का भाव है जो.
Benevolent. 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 Right? Okay. अगर जमीन बंजर है, जहां पे कुछ उग नहीं सकता, what do you call that? Barren land. Barren. Barren. Next, you can write down किसी चीज को थोड़ा सा खतरे की तरफ वो करना, to expose to risk, jeopardize. To expose to risk, jeopardize. और कई बार हम ये वर्ड यूज करते हैं debunk. Debunk. Can you tell me what it would mean? Debunk. What is someone requested? Videos. Yes, I will go ahead with videos on different topics. Currently, it's just this that I have difficulty finding people to edit the same. So currently, I'm going ahead, and later on, of course, I'll get more and more videos. But yes, you can even access the live videos later. That's fine, I think. If I've not been able to answer, then you can let me know. What do you say? Next one is debunk, to show that something is not done or not true rather. कोई चीज सही नहीं होती है तो आप उसको बोल देते हैं debunk. DEBUNK. So the author debunked the myth that working women cannot take care of children. Debunk. Next, spearhead. 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 So this means to serve as a leader. To serve as a leader. Spearhead. Consolidate. CONSOLIDAT. Consolidate. It means make stronger by some action. Make stronger by some action. So they thought taking care of each other could consolidate the relationship. Taking care of each other could consolidate their relationship. Now, I think whatever we decided for today, a bit of maybe this is yet to be done. Rest, most of it is done. Now, let me talk about your pronunciation. How are you working on improving your fluency? How are you doing it? And what do you think are the best ways to improve fluency? I'm helping you out with the vocabulary, or rather trying to help you out with the vocabulary. But whatever you're learning in the live, please make sure that you apply it with somebody in real life. You can talk to your friend, you can talk to your sister, brother, anybody special, whatever it is. But unless you speak out whatever you've been writing, the effect or the impact will be a little less if you don't do it. So please make a plan, make a timetable. There is some session called goal setting.
So some of the students who happen to attend personality development sessions know about goal setting. And even if you've not attended, you should set your goal. Decide, make a timetable, how much time you're going to give to English. With whom are you going to speak? If there is no one around, how will you still practice? I would suggest, even if there is no one around, you can start thinking in English. So many words we've discussed today, so many points, how to say this, how to say that. Okay, like another example. If someone says thank you, and please remember the pronunciation thing I talked of, between the teeth. Thanks, this, that. So if someone says thank you, what do you say? You're welcome? Yes, that's right. What is the other way you can respond to them? It is a British style of saying, you can say, you are very welcome. हो सकता है जिनको ना पता उनको थोड़ा अजीब सा लगे या झटका सा लगे आप क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बट आप सही बोलेंगे. You can say with a smile, you're very welcome. This is more of British style. Americans at times say, you say thank you, and they say no problem. No problem. Now, this American style may be appreciated by today's generation, but हमारे जैसे जो थोड़े सीनियर लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आता है नो प्रॉब्लम. तो उनके सामने आप मत बोलेगा नो प्रॉब्लम, राइट? उनको आप यही बोलेगा यू आर वेलकम, यू आर वेरी वेलकम. और क्या स्टाइल हो सकता है बोलने का? आपने बस में किसी लड़की को, अच्छी सी क्यूट सी बच्ची को सीट दे दी और वो कह रही है थैंक यू, तो ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा उसको सुनना? माई प्लेजर, द प्लेजर इज माइन, मेंशन नॉट. और एक स्टाइल में क्या बोल सकते हैं आप? एनी टाइम. ये आजकल बहुत रिवाज में है. तुम्हारी मीन्स यंगस्टर्स जब ज़्यादातर जवाब देते हैं उनको बोलो थैंक यू, तो दे वुड से एनी टाइम. एनी टाइम इन द सेंस कि भाई हम हाजिर हैं, आप कभी भी बताइए क्या काम है, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं. एनी टाइम. क्लियर? तो ये आप थैंक यू के रिस्पॉन्स में बोलते हैं. हाउ आर यू का भी आपको बता दिया. अब कुछ और चीज़ें हैं जो अगर हम नेटिव लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे वो भी आप लिख लीजिए. सो अगर आप इंडिया में बोलते हैं आई अंडरस्टैंड यू, तो ठीक है, नॉर्मल है, आई अंडरस्टैंड यू. बट इफ अ नेटिव स्पीकर हैज टू से द सेम थिंग, how will the native speaker say it? So the native speaker may choose to say, instead of saying I understand you, he may choose to say I feel you. I feel you. Next, अब इंडिया में हम लोग कहीं खाने वाने जाते हैं और हमें किसी को ये दिखाना है कि नहीं पेमेंट हम करेंगे, मैं करूंगी, तो मैं कहूंगी I will pay the bill. कोई भी he she will pay the bill. बट अगर नेटिव स्पीकर है वो क्या कहेगा? इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी. नेक्स्ट, ये तो आपने भी बहुत सुना होगा, चला ही हुआ है बहुत टाइम से. जैसे हम बोलते हैं माई मिस्टेक, तो वो लोग बोलेंगे माई बैड. थोड़ा सा अजीब सा लगता है अगर आप रेगुलर यूज में नहीं सुनते हैं, तो आप सिचुएशन के हिसाब से समझ लीजिए, मत बोलिएगा अगर कंफर्टेबल नहीं है या सामने वाले को नहीं समझ में आएगा. तो माई मिस्टेक, my bad. Then another one could be, ये आपको मैंने खुद भी बताया था कल, I'm very hungry. So if you're saying I'm very hungry, native speaker will say I'm starving. I'm starving. थक गई हूँ मैं अभी अब. It's time to like another 3-4 minutes and we'll call it a day. So I'm famished, I'm starving. अगर कहना हो आई हैव नो आइडिया, तो बताइए नेटिव स्पीकर क्या कहेगा? आपके दिल में भी आ रहा होगा यू हैव नो आइडिया कि वो क्या कहेगा. मे बी किसी एक आधे को पता हो थोड़ा बहुत, बट जनरली आई हैव नो आइडिया को नेटिव स्पीकर कहेगा बीट्स मी, BEATS, बीट्स मी, यानी कि पता ही नहीं है भैया हमें क्या जो भी आप पूछ रहे हैं. और आई अंडरस्टैंड, जैसे हम बोलते हैं इंडिया में कोई समझा रहा हो कुछ और हम उसको बताना चाह रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं. आई अंडरस्टैंड.
A native speaker will say, native speaker means जिसकी वो मातृभाषा है, जो वही भाषा बोलते हैं. A native speaker will say, I get it. I get it. Similarly, if the Indian person has to say, I don't understand it. A native speaker will say, I don't get it. और जब कभी कभी पेरेंट्स डांट लगाते हैं और कोई डांट लगाते हैं तो ऐसे होता है, डू यू अंडरस्टैंड. तो उसी तरह से वो लोग फिर यही कहेंगे, डू यू गेट इट. डोंट यू अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रहा, इतना समझाया समझ नहीं आ रहा. डोंट यू गेट इट. डोंट यू गेट इट. एंड देन व्हाट इज द वन दैट यू कैन थिंक ऑफ? रिलैक्स. ये तो इंडिया में भी बहुत यूज होता है. अगर आप इंडिया में बोल रहे हैं रिलैक्स, सो व्हाट विल द नेटिव स्पीकर से? चिल. गाने भी बने हुए हैं, जस्ट चिल चिल चिल, सलमान खान सॉन्ग. सो रिलैक्स इज चिल. क्लियर? Let me check if any more doubts are there, if anyone wants to know anything. So relax is chill, and after some time I will also chill. Yes. So अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, या मुझे ही बता देना पड़ेगा, असाइनमेंट रह ही जाएगा. Not many people answer. Then if you have to say, think about it. Think about it. तो कैसे बोलेंगे? सोच लो आप इसके बारे में. Think about it, whether you want the class at 8 or 9. बताइए. So think about it will be sleep on it. ये सबको नहीं पता है, बट ये एक फ्रेज है. Those native speakers use this a lot. अभी आपको जॉब ऑफर आ गया, आप सोच नहीं पा रहे हैं, जॉब दूसरी सिटी में है, एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, एंड आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख के वो कह सकते हैं, ऑलराइट, द ऑफर इज फॉर मुंबई, द ऑफर इज फॉर दिल्ली, स्लीप ऑन इट. स्लीप ऑन इट मीन्स अपना टाइम ले लो, फिर सोच के बता दो. स्लीप ऑन इट. स्लीप ऑन इट फॉर अ डे और टू, एंड देन वी कैन टेक अ कॉल ऑन इट. यानी फिर उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. Okay? So do you want to sleep on it? Whether the class should be conducted a little later? 2-3 students, of course, had shared that yesterday, but that was just a handful of students compared to how many students watch this. और अब क्या Saturday, Sunday दोनों दिन classes कम चाहते हैं बच्चे? So we'll have to increase the duration of the sessions during the daytime. I mean during the weekdays, I should say. Yes. No response here today, or a delayed response? आपको मैंने react और response का भी difference बताया था. This is more of personality aspect. कि जब आप बिना सोचे एकदम से बोलते हैं, that is react. बट आप समझ के जब जवाब देते हैं, अच्छी तरह से पहलू देख लेते हैं, और that is called respond. Respond. क्लियर? आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे जिसपे आप नेक्स्ट चाहेंगे कि आपको वीडियो बना के दिया जाए? एनीथिंग दैट यू आर टू कीन टू लर्न? कुछ ऐसा नहीं? सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑल्दो इट वाज काइंड ऑफ, जैसे होता है ना कि मिक्स वेज बनती है, मिक्स चाट बनती है, तो आज का ये मिक्स्ड लाइफ था आपके लिए, राइट? बिट ऑफ वोकैबुलरी, बिट ऑफ व्हाट नेटिव स्पीकर्स से, बिट ऑफ द एक्सप्रेशंस, एंड अगर पूछूं तो मेरे को टेस्ट भी ले लेना चाहिए आप लोगों का, एंड इट कुड इंक्लूड योर टंग ट्विस्टर्स, योर आर्टिकल्स, एंड योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव. देखती हूँ एक दिन एक लाइव में टेस्ट लेंगे, एंड
I'll see what is the method by which we can actually go ahead and do it. So see you on Monday at 8:30 or between 8 to 8:30. You can just check. I think might be that 8:15 could be neither here nor there. So 8:15 might be suitable for some, and then whatever decisions we take as a team, we'll go ahead with that. Thank you so much for your time. Though the number was less today, but whoever came, thank you so much. Thank you for your likes. Good night.